Hello everyone. In last class we discussed ideals, the definition and related properties. In fact, we also saw that if there are two ideals, let us say I1 and I2, then their intersection is also an ideal. ठीक है? But their union might not be an ideal. ठीक है? जो यूनियन होता है आइडियल्स का वो एक आइडियल जरूरी नहीं हो. ठीक है? So let's say that there is a ideal I1 and then there is this ideal I2. ठीक है? So we have discussed in previous class that in fact I1 intersection I2 is ideal of that ring और जिसके कि I1 and I2 ideal. ठीक है? But I1 union I2 may not be ideal of ring R for which I1 and I2 are ideal. इसका जो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं तो we can see we know that Z plus dot where Z is basically a set of integers, positive and negative, both integers means that only. So operation of addition and multiplication on a set of integers is a ring, basically a commutative ring in fact, and it has unity as well. ठीक है? So this is a ring. And if we define a subset of this ring nz, which will be like n x, where x belongs to integers and this n is fixed integer, ठीक है? Fixed integer, then nz is ideal of ring z plus dot. ठीक है? Of course in ideal also the operation will be plus and dot only, same operations should be there. अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने जो आइडियल की डेफिनेशन बताई थी उसमें बाय मिस्टेक लाइक कि फॉर ए बिलोंग्स टू लेट्स से आई एंड आर बिलोंग्स टू आर, जो ए आर एंड आर ए है दीज बोथ शुड बिलोंग्स टू आई, नॉट आर. आर में तो होंगे ऑफ कोर्स बिकॉज आई इज सबसेट ऑफ आर. I is subset of R, right? I is subset of R, so any element in I will be in R as well. So and R is a ring, so closure with respect to multiplication will hold in R. So this is true for every element in R in fact. ठीक है? So for ideal this AR and RA should be in I. Basically I absorbs this. I use the word absorption by of element of R by I. ठीक है? So this AR and RA should be in I. Then only will say कि I जो है वो ideal है. Basically there were two conditions. जो I है that should be subset of R, first condition, and second condition was that for A, B belongs to I, A minus belongs to I, and for A belongs to I and R belongs to capital R, AR and RA both belongs to this I, then we say that I is ideal of R. Two-sided ideal. There are concept of left and right ideal that I discussed in last class. So this can easily prove that nz is in fact ideal of z plus, because first thing will be satisfied here. nz is ideal of R. nz means क्या हुआ? n into z क्या? 1 हो गया, 2n, 3n, so on. So all these are of course जो भी सेट बनेगा यहाँ पे, जैसे मान लो 2, 4, 6 ऐसा कुछ बना. So this will be subset of z, जो z integers का ग्रुप है उसका सबसेट ही होगा. So first condition is satisfied. Second condition that for n is fixed, let's take x and y, two integers. This belongs to z where x, y belongs to z. ठीक है? This belongs to nz, right? So then nx minus अगर ny किया जाए, so we can take n common and x minus y will be there. How can we do this? Because nx and ny are also element of this ring R. So in R, this additive inverse will exist. We know that ring की तो property यही है that R plus is an abelian group. So minus ny for n there will be negative additive inverse minus y. So ny के लिए there will be additive inverse minus ny. So this can be clubbed this way by the closure and inverse property in R plus. ठीक है? R plus में जो closure and inverse axiom है, by the help of that we can write this way. But then again x minus y, this belongs to nz because x minus y belongs to z by closure in z. Closure plus inverse both combined.
And second property is if we take if we take let's say small r for r belongs to r and nx belongs to nz, if we take r multiplied by nx, so because n is fixed integer, r, n and x all are integers, and we know that integer multiplication is associative, so this n can be taken outside, so this will be rx. ठीक है, we can put it this way. ठीक है, so then again this rx अच्छा, we have to show that this r multiplied by nx belongs in this nz, but this rx is element, this rx is integer in fact, right? By multiplication of any two integer will be integer itself. So and this n is fixed, so this element is again of this form. जो nz हमने डिफाइन की थी, nz हमने ऐसे डिफाइन की थी n into x, where x is element of z. So यहाँ पे rx is element of z, so this will of course belongs to nz. Thus nz is ideal of z plus dot. ठीक है, बस ये कंडीशन हमें देखनी थी, सबसेट होना चाहिए और नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए. इनफैक्ट वी कैन से दैट 0 belongs to nz. So नॉन एम्प्टी, subset of the ring, and then these two properties. For a, b belongs to I, a minus b belongs to I, and for r belongs to capital R, and any a belongs to I, a, r and r, a should be in I as well. So then these are the ideals. Okay, so अब देखो, अब इसमें जो nz है, nz को we can write this way also, n. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, where n is a fixed integer. ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रिंसिपल आइडियल. ठीक है, ये बड़ा आसान सा एक कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल आइडियल. प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है? इफ एन आइडियल इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट of a ring, then such ideal is known as principal ideal. Principal ideal of that ring. Okay, अगर एक एलिमेंट इज only one element is able to generate the given ideal, then we say that ideal is in fact principal ideal. So इसकी definition क्या होगी? So I is generated by a single element. Let's say it is generated by A, where A belongs to R, where R is the ring जिसका कि I ideal है. ठीक है, so then we say that this I is generated by a single element A, or this is also written as AR, where R belongs to R, और A तो जो है R में है ही, that is a fixed. So for every R this will be the case. So this is the definition of ideal. So किसी भी रिंग का जो आइडियल है, अगर वो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल आइडियल है, और किसी एलिमेंट एक एलिमेंट से वो जनरेटेड है. जैसे इस केस में क्या बोलेंगे, दिस इज आइडियल ऑफ R, प्रिंसिपल आइडियल ऑफ R, principal ideal of R generated by element A. ठीक है, this is the thing. So this is how we define principal ideal. ठीक है, जैसे अगर अब एग्जांपल लिया जाए, मान लो ये आइडियल ले लिया हमने. तो इसको we can write, मान लो ये of course this okay, let's write this can be written as 2x, where x belongs to z. So then this will be of course subset of z. So this is ideal generated by 2, ideal of z generated by 2. So, okay, so we can write this is ideal generated principal ideal. ठीक है, principal ideal generated by 2. ठीक है, ऐसे ही we can write 3 as well. इसको we can अगर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लिखे तो वी कैन राइट दिस लाइक -2 0 2 4 एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे 3 क्या होगा,
3y where y belongs to z. This is also a principal ideal of z generated by element 3, or this can be written as -3 and 0, 3, 6, 9 and so on. ठीक है, अब इससे we have proved that कि मान लो इसको I1 बोल देते हैं for time being and this is I2. So if we take I1 union I2, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? इसमें देखो -3 भी होगा, वहाँ से -2 आ जाएगा, 0 तो है ही, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, वहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, सो ठीक है। अब देखो नाउ व्हाट वी कैन से दैट, देखो आइडियल की डेफिनेशन क्या है कि क्लोजर उसमें सेटिस्फाई होता है, ठीक है। क्लोजर तो सेटिस्फाई होगा बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर विल बी सेटिस्फाई बिकॉज आइडियल इज आई प्लस इज सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, ठीक है। इसका सब ग्रुप तो होता ही है वो, दैट्स वाई वी से दैट ए माइनस बिलोंग्स टू ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू आई। सो इसमें अगर अपन ये दोनों एलिमेंट ले लें, इफ वी टेक 2 and 3, they belongs to this, let's call this b, they belongs to b, but 2 plus 3 किया जाए, so this will come out 5 which is not part of b, this is not in b, 5 तो इसमें है ही नहीं बिकॉज 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल दोनों में 5 नहीं आएगा, ओके। सो I1 intersection I2 is not an ideal of z plus dot, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो प्रिंसिपल आइडियल हमने डिफाइन किया था, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो रिंग है, ये जो रिंग है दैट शुड बी कम्यूटेटिव, रिंग इसकी जगह दैट शुड बी कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा कि आर किस साइड में रखा जाएगा, राइट। सो दिस रिंग शुड बी कम्यूटेटिव, ठीक है। सो प्रिंसिपल आइडियल ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज डिफाइंड एज दिस, ठीक है। और यहाँ पे बिकॉज जेड जो है दैट इज ए कम्यूटेटिव रिंग, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस दैट आइडियल जनरेटेड बाय 2 and 3, ठीक है। ऐसे ही वी कैन से दैट लेट्स से दैट दिस इज ए रिंग डिफाइंड एज, this is a ring R defined as polynomial functions a0 plus a1x plus an x power n such that these coefficients are from real number system, ठीक है, where I is 0 से लेके n तक, ठीक है। So we define this ring as this is a set of basically polynomials whose coefficients are from real number system, ठीक है। और लेट्स से I डिफाइन करते हैं सबसेट ऑफ R such that let's call this is fx equals to, है ना। So इसको we can say that fx belongs to R such that a0 equals to 0. Let's define subset I of R in this way. Basically what we are saying that I is subset of R means I is consist of all those polynomials for which constant term is 0. So of course it will be subset of R, भाई जो I में होगा वो R में तो होगा ही, ठीक है। So I is subset of R, I is subset of R, first condition is satisfied. Let's say that to show that I is ideal of R, ठीक है। या मान लो हमें ये पूछा जाए कि prove that I is principal ideal of R. So for that first we have to show that this is an ideal, and second we have to show that this is generated by a single element, ठीक है। So पहले let us show that this is an ideal, ठीक है। So let fx and gx belongs to I, where fx can be written as a1x and so on, a and xn, because a नोड तो 0 है इसमें, that is the definition of I, and gx can be written as b1x and so on, b and x power n, where of course these ai's and bi's are in real number system. As I is subset of R and 0 belongs to I,
भाई जीरो पॉलिनोमियल जो है उसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट विल बी जीरो, so this is non-empty. I is non-empty. This is the first thing we saw, whether it is subgroup or subring or ideal. First thing we saw that this is a subgroup of that bigger set जो भी ring है या group है. Second is that this is non-empty. Now third जो भी condition हमें satisfy करानी है that for ideal क्या होना चाहिए, ठीक है, for fx and gx belongs to I, if fx minus gx किया जाए तो ये क्या आएगा, this can be defined as f minus gx equals to fx minus gx. so ये क्या आएगा देखो, a1 minus b1x and so on plus an minus bn x power n. We can say like this. This is so because ai and bi are in real number system and जो real number system है, set of real number system is a ring with respect to addition and multiplication. So R plus will be abelian group, so that's why we can club these ai and bi together. Abelian भी होगा, so we can take it in any order as we please with respect to addition only. Okay, multiplication will also be abelian in fact, but here we need only addition part. So अब देखो, because these as ai minus bi belongs to R for each I from 0 से जो भी n तक, ठीक है, so this will be in fact ठीक है, and constant term of f minus gx is 0, ठीक है, so constant term is 0. So what will happen, then we can say that f minus g belongs to I, we can say this function belongs to I. Okay, so first condition satisfied. Further let us take hx belongs to this R जो ring है and fx belongs to I, ठीक है. Now if we take hx, या इसको we can define like this, if we take h fx which is अच्छा यहाँ पे देखो, this is not composition. Generally in rings this will be point-wise multiplication. This is how we define point-wise multiplication. Point-wise multiplication of functions ठीक है. polynomials with respect to operation, polynomial addition and point-wise multiplication of functions is a ring. So these are the two operations. In fact this year this 2022 there was a question based on ideals. The concept of prime ideal was used. We will discuss that. In fact, I gave question in test series as well related to the concept on which the question was based. So that we will discuss later on. So in that also, this is not a composition thing. Always remember that when we discuss polynomial rings or set of polynomials, then the operation to be this set ring is R, point-wise multiplication of polynomials and point-wise addition of these polynomials, ठीक है. So this is not composition but point-wise multiplication. Okay, so yeah, so now we can say that hx तो क्या है, एक normal जो भी है function है, let us call it c0 plus c1x and so on cn xn, ठीक है. और ये क्या होगा sorry, fx is in I, so constant term will be 0, so this will be a1x and so on an x power n, ये होगा. अब this can be multiplied. See, in this there is no constant term, so even this constant term will no more be constant now, because ये जो c नोर है it will get multiplied by every other coefficient of this. So in fact at least इसमें जो minimum power of x will be 1, x power won't be 0, there won't be any constant term. We can say that देखो x के कोएफिशिएंट में क्या आएगा, a1 यहाँ से आ जाएगा, a1 c नोर. We can put c नोर before or a1 later on as we please, because this is a commutative operation. Polynomials multiplication or constant multiplication or element multiplication of elements of R is commutative, ठीक है. ओके, सो अच्छा, और x का यहाँ से x का कोएफिशिएंट और कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से मिल गया और कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है. और सब जो है x स्क्वायर एंड सो ऑन एंड x पावर n
x पावर n एंड x पावर n क्या हो जाएगी 2n n, इस टाइप चलता रहेगा कोएफिशिएंट एंड सो. सो देन अगेन दिस बिलोंग्स टू i एज कांस्टेंट जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म ऑफ एफ जी एक्स इज 0. ठीक है. And all these coefficients are in real number system. Of course, multiplication of real numbers will be real number itself. ठीक है. अच्छा, ये similarly we can show that similarly f h x करेंगे, that will be fx dot hx point-wise multiplication. This will also be an I. Similar concept. ठीक है. Thus I is an ideal of आर प्लस डॉट जो रिंग हमने डिफाइन की है. ठीक है. अब हमें शो करना है कि ये प्रिंसिपल आइडियल है. फर्स्ट पार्ट तो हो गया. अब हमें ये शो करना है कि दिस इज ए प्रिंसिपल आइडियल. तो वी कैन शो दैट एज वेल. देखो, जो हमने आई डिफाइन किया है वो कैसे डिफाइन किया है, एन और जीरो है, मीन्स उसमें इस टाइप की टर्म है ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स पावर एन एंड दिस ए आई आर फ्रॉम रियल नंबर सिस्टम. और इसको वी कैन राइट, एक्स को वी कैन टेक कॉमन, दिस विल बी ए वन प्लस a2x plus so on and plus an x power n minus 1. ओके, ये हो जाएगा. और जो AIs है that are in real number system. ओके सो नाउ अच्छा ठीक है. अब इसको वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, x gx where gx is from the ring R. भाई दिस इज ऑल्सो जनरल पोलिनोमियल जिसका कांस्टेंट टर्म भी है. और देखो यहाँ पे n जो है वो n एक हमने डिग्री ली हुई है. ठीक है. इसमें कि सारे पोलिनोमियल आएंगे. इनफैक्ट देयर विल बी इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन दिस रिंग. दिस n इज नॉट अ फिक्स थिंग हियर. ठीक है. सो इनफैक्ट दिस gx इज इन आर. और इसको वी कैन राइट लाइक दिस एज वेल ना, x. ठीक है. वेयर x इज फ्रॉम r and is a fixed polynomial in fact, जिसके लिए कि a1 is 1 and all other coefficient are 0. because this is the definition. इसको अगर अपन extended form में लिखेंगे तो x into element of r, जो कि यहाँ पे हमने जैसे gx बोला है ऐसे ही तो लिखेंगे. so this is in fact this is the definition of principal ideal. thus I is a principal ideal of R generated by element x. okay, I hope समझ में आता है. so this is the concept of principal ideal.